Hey, what is up YouTube? It's been a while since I've uploaded a video, but today is the 7th of March and it's around 9:30 in the morning and I'm heading off to Mira Road. And today is Sunday, means it's going to be fun day, but today's fun day is going to be another modification. So yeah, today's modification is finally going to be the chain sprocket. Chain is stock, front sprocket is stock, but the rear sprocket is the one that I had featured on my Instagram page. If you haven't followed me there, then go and do it. It is a custom made rear sprocket with 44 teeth for the FZ25. तो मैं वो लगाने जा रहा हूँ मेरे बाइक पे. I want to see what difference it makes. I've made a lot of modifications on my motorcycle, but I've never ever touched the sprocket and chain. This is the first time I've got a custom one made. So that is today's agenda. ये sprocket मेरे पास almost 4-5 months से पड़ा हुआ है, पर मैं install नहीं कर रहा था because मेरा जो current जो stock chain था उसमें more than enough life है. But finally I decided let's change it and let's install this. So yeah, let's quickly go to Mira Road and get this installed. I can't wait to see what it's like. ठीक है, चलो, see you there. Guys, we are going to the service center, which is pretty much 2 minutes from Vishal's house, and this is the oh bhai aaram se this is the oh bhai maro this is the sprocket. I was ready that time. दिख रहा है कि नहीं क्या पता. Anyways, it has my name printed on it and this is 44 teeth. I showed this to Vishal and he said that it is very light compared to the stock. I don't know what the stock weighs, so I'll be checking it there. Let's see, let's quickly go and get this installed. तो मैंने दे दिया है मेरी बाइक सर्विस सेंटर को. अभी वो लोग बोल तो रहे कि 3-4 तो बज जाएंगे देने तक बाइक, तो दैट इज़ अ लॉट ऑफ टाइम. होपफुली फटाफट थोड़ा दे देंगे वो लोग, पर तब तक तो मेरी बाइक वहाँ पे है. तो हम लोग अभी विशाल के बाइक पे काम करने वाले हैं. अभी विशाल के बाइक पे भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है, जैसे वायरिंग का कोई तो इशू है तो वो सॉर्ट आउट करना है. उसके अलावा बाइक को रबिंग कंपाउंड अप्लाई करना है, पॉलिश अप्लाई करना है. तो मैंने जो वीडियो बनाया था वो चेकआउट करना. आई बटन या तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा. उससे बाइक बहुत सही शाइन करती है, तो वो मैं वापस एक डेमो दिखा दूँगा फटाफट करके. इफ़ यू लाइक द रिजल्ट डेफिनेटली गो चेक दैट वीडियो आउट. तो ये सब भी करना है. सो वी आर गोइंग नाउ टू द मार्केट नियर बाय. वो कहाँ पे पता नहीं. बाइक से फटाफट जाके वी विल गेट द सामान. वी नीड रबिंग कंपाउंड एंड वैक्स. बाकी सब तो मेरा वो ड्रिल विल का जो भी है वो सब मैं लेके आया हूँ, तो वो अभी जाके करने वाले हैं. जब मेरी बाइक मिल जाएगी तब मेरे बाइक पे भी थोड़ा बहुत काम है वो कर लेंगे. लेट्स सी, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि जो स्प्रॉकेट है वो बैठ जाएगा. प्रॉब्लम इतना ही है कि स्प्रॉकेट जो है वो छोटा है, स्टॉक स्प्रॉकेट्स है, और इस चेन का ना लिंक खुलता नहीं है. सो इट्स अ फिक्स चेन, तो होपफुली कुछ तो जुगाड़ बैठ ही जाएगा. लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट. सी या. So we are back guys. We have got this rubbing compound and this is wax. तो अभी बाइक के ऊपर काम कर रहे हैं. मेरे बाइक को गॉड नोस कितना टाइम लगने वाला है. पर एक बहुत अच्छा चीज़ हुआ कि ये सब जहाँ से हम लोग ने लाया, उन्होंने बोला कि अगर चेन नहीं एडजस्ट हो रही है तो उस चेन को हम लोग तोड़ के लॉक लगा सकते हैं एंड वी कैन गेट इट एडजस्टेड. सो आई हैव माई फिंगर्स क्रॉस के ऐसे स्टॉक चेन पे ही हो जाए. पर अगर नहीं होती स्टॉक चेन पे, सो वी कैन गेट द चेन एडजस्टेड एंड इंस्टॉल्ड. एनीवेज, वो सब तो ठीक है. फ़िलहाल तो हम लोग इस बाइक पे काम करेंगे. इट स्टार्ट्स नाउ. वेलकम बैक गाइस. तो R15 का जो है वो रह गया है वैक्सिंग करके फटाफट हम लोग जाने वाले थे सर्विस सेंटर पर. मेरे को कॉल आया सर्विस सेंटर से एंड दे आर टेलिंग मी के
और जो सस्पेंशन है उसका बुशिंग भी ख़राब हो गया है, और जो स्विंग आर्म है उसका बुशिंग भी ख़राब हो गया है, तो वो सब चेंज करना पड़ेगा। कॉस्ट बढ़ते आ रहा है, सो वी आर जस्ट गोइंग क्विकली एंड गोइंग टू चेक व्हाट इज़ रॉन्ग। प्लस चेन स्प्रॉकेट का भी देख लेते हैं कि क्या सीन है। चल भाई। How was the experience? Very good. To extent. Tell me in brief. The experience was very good. So guys, we are done with the chain and the sprocket and everything. अभी chain sprocket तो डाल दिया है. The feel is good surprisingly. मतलब मैंने ना बहुत ज़्यादा power loss expect किया था, because I forgot to tell you all, ये जो sprocket है this is 44 teeth, ये जो है this is stock, this is 46 teeth. अगर आप पीछे के स्प्रॉकेट के दांत कम करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपका पावर ना थोड़ा कम हो जाता है, टॉप स्पीड बढ़ता है, माइलेज बढ़ता है, ऐसा बोलते हैं। एक्चुअली वैसा होता है कि नहीं पता नहीं मेरे को, पर आई हैड पुट इट क्योंकि मेरे को ना टूरिंग और क्रूजिंग वैसे थॉट से मैंने बनाया था कि थोड़ा ना लो रेविंग रहेगी बाइक, थोड़ी स्मूथ रहेगी बाइक, इसके लिए मैंने 44 टीथ के ज़्यादा डिफरेंस भी ना है। सेकेंडली वेट में तो बहुत डिफरेंस है इसमें और उसमें, बहुत ज़्यादा डिफरेंस, ऑलमोस्ट डबल वेट है स्टॉक का उससे। बट एनीवेज द पॉइंट इज़ के बेड तो गया है पर चेन में थोड़ा सा इशू है। सो आई क्विकली गो टू विशाल्स हाउस एंड आई शो यू ऑल व्हाट दैट इज़, व्हाट द इशू इज़। पर वैसे बाइक चलाने में ना बहुत मज़ा आ रहा है। Alright you guys, welcome back. So this part of the video I'm shooting after almost like 2 weeks of using the Sprocket, and let me quickly show you what it looks like. It looks something like this. Can you see how new the chain is? You can even see the lock. So anyway, so after using it for nearly 2 weeks, I've noticed a few problems and some amazing pros as well. The number one problem that I've noticed is that when you install the chain starting से ही loose लग जाता है. So it is already on the second setting after installing it, which is not a good thing. There are alternatives. You can break the chain and put a master lock and stuff like that, but I haven't done any of that yet. I'm still using it on the stock chain only. The other problem that I've noticed with this sprocket is obviously loss of power, because you've installed a smaller sprocket. So because it is a 44 teeth sprocket, there is somewhat loss in power. It's not a lot, पर अच्छा है. Like I don't care much about it. I enjoy the purpose for which I bought this sprocket. Now let me quickly tell you the benefits of installing this sprocket. The number one benefit is refinement. The bike is running smooth, it is running refined, and at the same time it can do more speed also. That's number two benefit, कि 4000 RPM पे it is doing nearly 64 or 65 kilometers per hour. Another advantage is mileage, पर वो मैंने टेस्ट नहीं किया है, but I feel the mileage has improved, क्योंकि मेरा जो फ्यूल गेज है आई हैव रिमेंबर्ड कि कितने किलोमीटर्स पे वो कम होता है, and it hasn't reduced. So that I'll keep you updated in the comment. When I'm cruising on the highway and stuff, the bike is very smooth, very refined, and that is exactly what I wanted. I don't mind losing initial pickup, but I wanted refinement on long runs. So that is the main advantage. So that's pretty much it for this video, you guys. I'll put up another updated video for the Sprocket to give you all an update after like say 2000 or 4000 kilometers or something like that, to tell you how it's performing. But that's it. Those are the pros and cons. I'll see you in the next one. In case you like videos like this which have modifications and stuff, consider subscribing to the channel. I'll see you in the next one. Bye bye.